उदय नमस्ते। नमस्ते सर। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को मतलब फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये जब डबल जेopardy को डील करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डील करता है आर्टिकल 20। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है, जजमेंट के साथ। जी सर। तो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। जी सर। सर शुरू करता हूँ मैं। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ ना इधर से, पब्लिक को भी अच्छा, पढ़ने में अच्छा रहेगा ना फिर। ठीक है सर। ठीक है सर। जी। Introduction. Article 20 of the Indian Constitution provides protection to the citizens of India against arbitrary and unjust treatment by the state. Arbitrary मतलब जो मन मर्जी कोई करे अपना मन मुताबिक, without any thought to the laws, and unjust जो सही मतलब कानूनी तौर पर सही नहीं हो by the state. This article is a part of the fundamental rights and guarantees certain safeguards to individuals against conviction and punishment for offences. सर आप हिंदी में थोड़ा सा बोलेंगे इस विषय में कुछ, या ऐसे ही पढ़ता रहो? नहीं, अब रहने दो ना अभी, क्योंकि कितने जी जो जी लॉ जी, के स्टूडेंट है, दे आर सपोज टू नो द लॉ ना। अब इंग्लिश मालूम करेक्ट पड़ना सर. चाहिए ना उनको। The principles enshrined in Article 20 are crucial to ensuring the rule of law and protecting the rights of individuals in a democratic society. They are also essential to preventing the abuse of power by the state and maintaining the balance between individual liberty and the interests of the society as a whole. अब क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये बोल रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स द कॉमन मैन फ्रॉम द आर्बिट्री एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट बाय द स्टेट In a democracy. इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, तो Correct, sir. यहाँ पर ये नहीं है कि पुलिस वाले का मन किया और आपको दो थप्पड़ मारे, उठा के अंदर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता जी है। जी देयर जी हैज टू जी बी सम कोजेंट रीजन, कोई लीगल बेसिस जी। होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों वो उठा रहा है वो। तो इसमें 3 क्लॉजेज हैं सर आर्टिकल 20 में, जो नीचे ये बताए हैं. Article 20 provides protection in respect of conviction for offences. Following are the 3 clauses under Article 20. The first clause, Article 20, Sub-Article 1. No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. नो पर्सन Essentially, शैल बी कन्विक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्विक्टेड, मतलब ट्रायल के बाद हाँ conviction of an offence हाँ, कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द at टाइम, that time of the commission. एंड देन Uh, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। यहाँ पे offense की बात कर रहा है। offense जी मतलब जी क्रिमिनल। जी जी तो जो एक्ट प्रिवेल कर रहा है, जिसमें उसको आपने जिसको अरेस्ट किया है या जिसमें ट्रायल किया है, तो उसमें जितना प्रेस्क्राइब्ड है, जो लॉ उससे में अधिक नहीं हो प्रेस्क्राइब्ड है वही सकता. कर सकते हैं। ये नहीं कि बाद में कोई कानून बना और जिस समय वो ऑफेंस हुआ था उस समय जो करेक्ट, वो कानून नहीं था, तो आप उसको नहीं उठा सकते। ये कहने का मतलब इनका ये है। और बिल्कुल पेनाल्टी सर. भी उतनी ही लगाएंगे जितना उस कानून में मेंशन है। उस समय लागू था, हाँ मेंशन्ड हाँ, है. अब जैसे मान लीजिए बाद में चेंज करके उसकी कहीं पर कोई पेनाल्टी 5,000 उसकी 10,000 कर दिया है, तो जिस समय वो नहीं हो ऑफेंस हुआ पाएगा. था उस समय अगर 5,000 था तो 5,000 ही लगाएंगे। 5-6 हजार ही लगेगा. करेक्ट. हम्म।
Clause 1 of Article 20 of the Indian Constitution states that no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offence. This means that a person cannot be convicted for an act that was not an offence at the time of its commission. This clause is known as the principle of ex post facto law. It is an essential safeguard against the arbitrary and retrospective application of criminal laws. हाँ, so no criminal law can be applied retrospectively. मतलब Yeah. पीछे नहीं जा सकते हैं. Yes. But at the same time, Article 20 is not absolute and is subject to reasonable restrictions. For instance, Clause 1 of Article 20 does not prevent the legislature from making a law retrospective if it is for the benefit of the public or for any other reasonable purpose. तो वो तो है ना, वो तो इम्प्लाइड है ना. अगर उन्होंने कानून बना दिया है और उसमें बोला कि ये अप्रैल से लागू होगा और बनाया है जून के महीने में, तो वो अप्रैल के महीने में ऑफेंस माना जाएगा ना. वही बोलना चाह रहा हूँ. जी जी. Then ये डबल coming to number 2, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Double jeopardy. Clause 2 of Article 20 of the Indian Constitution provides protection against double jeopardy. It states that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. This clause ensures that a person cannot be tried and punished twice for the same offense. However, if a person commits different offenses arising out of the same act, then he can be charged and punished separately for each offense. This is perfectly logical and correct. Now Different offense. let me explain this in this manner. Suppose a trial has taken place and a person is convicted. Okay, now Yes, sir. in appeal, the person who is convicted is acquitted now. So this article, this sub clause clause 2 of Clause article 2. 20 stipulate that for the same offense in which he was tried and convicted, afterward High Court has acquitted, so he will not be tried again in the lower court for the same offense. It's like that. So, एक राइटर वही है, if a person commits different offenses arising out of the Different same act, offense then he आता can है be ना. charged. Hmm. वो तो अलग मतलब That बन means जाएगा ये offense. again that rider is there that it should not be the same offense. Correct, sir. डिफरेंट ऑफेंस हो जाएगा ना. अभी अगर मान लीजिए किसी एक्ट में उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लगाया है एंड सो ही वाज नॉट राइट फॉर दैट, जी. तो उस सेक्शन को अगर लगा करके फिर से ट्राई करेंगे तो उसके बारे में ट्रायल चलेगा. पॉसिबल है. हाँ. फिर बोल रहा है, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर गड़बड़ हो जी, जाता है. अब सुनो, कस्टम एक्ट जी, में जी. एक सेक्शन है 108. वो क्या बोलता है कि आपको सही बोलना है, सही के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, और अगर आपने कुछ झूठ बोला तो यू विल बी ट्राइड. सो दिस 108 is in conflict of this. So Article when 20. criminal trial takes Clause. place, hello, Yes, sir. when criminal trial take place, so that time the magistrate or session or high court goes into the things like that. The purpose of custom act is slightly different. So article 20 in bracket 3 is not applicable in that case. ऐसा करके उड़ा देते हैं वो लोग, बिकॉज वहां पे तो कमिट कर रहा है ना कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है. जी, जी. पुलिस केस में नहीं कर सकता. पुलिस केस में वो मतलब हाँ. माना ही नहीं जाएगा ना. नहीं, उसका तो कानून ही, फिर कस्टम्स का तो अलग कानून है एकदम. That is a separate law by itself. Person cannot be forced to testify against himself or herself. Against himself or herself.
और वो एविडेंस एक्ट में भी गड़बड़ कर देता है। वहां पर एविडेंस एक्ट में क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी अपने आप मान रहा है, मतलब कन्फेशन कर रहा है, कन्फेशन इज नॉट टू बी entertained इन द फेस वैल्यू बिकॉज he may be protecting somebody else. or he may have been coerced to make a confession. हाँ, This clause is based on the principle that it is the duty of the prosecution to prove the guilt of the accused, and not the duty of the accused to prove his or her innocence. correct. फिर बोलता clause 3 of Article 20 does not prevent the state from compelling a person to give evidence in certain situations, such as when a public servant is being investigated for corruption, or when the safety of the public is at risk. Yes. दोनों important है. Investigation for corruption and safety of public at risk. फिर लैंडमार्क केसेस बोल रहा है आर्टिकल 20 केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. दिस केस इसको द इसको सुप्रीम इसको कोर्ट मैं खोल हेल्ड. देता हूँ, एक मिनट खोल देता हूँ इसको, इंडियन कानून में जाके खोल देता हूँ इसको, है ना? जी जी. तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा ये। इसको बाजू में रखेंगे, इसको मैं खोलता हाँ हूँ। जी. 2 दिन पहले यहाँ पर इतना धूल आ गई थी कनाडा से, जो कनाडा में जो आग लगी हुई है ना जंगल में, जी जी जी. उसका पूरा धुआं इधर आ गया था, न्यूयॉर्क से लेकर के यहाँ तक पूरा भर गया था। मतलब जून का महीना है और इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी वाज डिटोरेटेड, लाइक पोल्यूशन. हाँ, 500 से ऊपर हो गई थी। ये हर साल लग जाता ऑलमोस्ट. ये है 20 जनवरी 1962 का केस है ये। जी. इसको शेयर करता हूँ, देखते हैं कितना लंबा है ये। खुल गया, जस्ट मोमेंट बोला, खुल गया। इम्पोर्टेंट जगह पढ़ लेंगे हम लोग. हेड नोट होगा ना, पुराना केस है तो ये हेड नोट, ये हाँ हाँ. AIR से नहीं. लिया होगा ना इसमें। जी जी जी. आ गया। आ गया सर. थोड़ा सा नीचे. जी सर. 1 2 3 4, बाप रे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो। हाँ, BP सिन्हा साहब का है, अच्छा। ये बेंच देखिए फिर से बता रहा है. BP सिन्हा, SK दास, AK सरकार, राजगोपाल एन आयंगर, JR मुधोलकर. 4 लोग हैं ना, अच्छा। हाँ. सेडिशन, Sedition content of statute penalizing sedition and statements conducing to public mischief, whether it constitutionally infringes freedom of speech, then IPC 1960 sections 124A, then 505 Constitution of India article 19 Constitution of 191A and 192. Section 124A of the IPC, which makes sedition an offence, is constitutionally valid, though the section imposes restrictions on the fundamental freedom of speech and expression. The restrictions are in the interests of public order and are within the ambit of permissible legislative interference with fundamental right. There is a conflict on the question of the ambit of Section 124A between decision of the Federal Court and of the Privy Council. ये पीछे चला जा रहा है. Federal Court has held that words, deeds, or writings constitute an offence under Section 124 only when they had the intention or tendency to disturb public tranquility, to create public disturbance, or to promote disorder, whilst the Privy Council has taken the different view, that it was not an essential ingredient of the offence of sedition under Section 124A, that the words etc. should be intended to or to be likely to incite
public disorder. Either view can be taken and supported on good reasons. If the view taken by the federal court was accepted, Section 124A would be useful would be used constitutional, but if the view of the Privy Council was accepted, it would be unconstitutional. Would be hoga constitutional, but if the view of the Privy Council was accepted, it would be unconstitutional. It is well settled that if certain provisions of law construed in any one way would make them consistent with the Constitution, and another interpretation would render them unconstitutional, the court would lean in favor of the former construction. Well, it should be क्यों क्यों bold, it is well settled that if certain provisions of the law construed in one way would make them consistent with the Constitution, comma there, and another interpretation would render them constitutional, the court would lean in favor of the former construction. Keeping in mind the reasons for the introduction of Section 124 and the history of sedition, the section must be so construed as to limit its application to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbances of law and order or incitement to violence. केस फॉलो कर रहे हो इसमें रमेश थापर को भी लेके आ रहे हैं हाँ, State of Madras. Each of one of the constituent elements of the offence of making, publishing, or circulating statements conducing to public mischief, punishable under Section 505 of the IPC, had reference to and a direct effect on the security of the state or public order. Hence, the provision of Section 505 was clearly saved by Article 19(2). ओके इसमें इसमें तो लंबा कहानी बताएगा लास्ट में क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं when so far as अच्छा ठीक है कोई इसमें कई केसेस नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है उसको जी दिस स्टेटमेंट इसके ऊपर चला जाता है फिर तो क्या चला जाएगा फिर सर नीचे चले जाते हैं क्योंकि प्रीवी काउंसिल से शुरू कर रहा है ना हम लोग और नीचे जाते हैं इट अपीयर्स टू मी बोल रहा है वो क्या है नहीं ये तो जज ही बोल रहे हैं तो आज लिखना चाहिए था ना कई लोग हैं ना वो नहीं एक पर्टिकुलर जज का नाम ऊपर होगा हाँ बीपी सिन्हा साहब हैं ये पढ़ो इन व्यू ऑफ द In view of the conflicting decisions of the federal court and of the Privy Council referred to above, we have to determine whether and how the provisions of sections 124A and 505 of the Indian Penal Code have to be struck down as unconstitutional. If we accept the interpretation of the federal court as to the gist of criminality in an alleged crime of sedition, namely incitement to disorder or tendency, or the likelihood of public disorder or reasonable apprehension thereof, the section may lie within the ambit of permissible legislative restrictions on the fundamental right of freedom of speech and expression. There can be no doubt that apart from the provision of sub-article 2 of Article 19, sections 124 and 505 are clearly violative of Article 19
1A of the Constitution. But then we have to see how far the saving clause, namely clause 2 of Article 19, protects the sections aforesaid. Now, the already pointed out in terms of the amended clause 2 quoted above, the expression in the interest of public order are words of great amplitude and are much more comprehensive than the expression for the maintenance of. हम्म इंटरेस्ट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ में एक डिस्टिंक्शन बना रहा है interest हम्म of public order for the maintenance of public order as observed by this court in the case of Virendra versus the state of Punjab. Any law which is enacted in the interest of public order may be saved from the vice of constitutional invalidity if, on the other hand, we were to hold that even without any tendency to disorder or intention to create disturbance of law and order by the use of words written or spoken, which merely create disaffection or feelings of enmity against the government, the offense of sedition is complete, then such an interpretation of these sections would make them unconstitutional in view of Article 19(1)(a), read with Clause 2, it is well settled that if certain provisions of the law construed in one way would make them consistent with the Constitution, and another interpretation would render them unconstitutional, the court would lean in favor of the former. Consistent with the Constitution जो होगा certain provisions, the court will lean against the former. ये तो construction. The provisions of the sections read as a whole, along with the explanation, make it reasonably clear that the sections aim at rendering penal only such activities as would be intended or have a tendency to create disorder or disturbance of public peace by resorting to violence. As already pointed out, the explanations appended to the main body of the section make it clear that criticism of public measures or comment on government action, however strongly worded, would be within reasonable limits and would be consistent within the fundamental right of freedom of speech and expression. मतलब कोई criticize कर रहा हो तो that will not go against that person. So construed, तो बहुत ज्यादा पानी चला गया ना, गंगा का गंगा पानी बहुत बह गया, अब the तो बहुत section, आ in गया our बीच opinion, में. strikes the correct balance between individual fundamental rights and the interest of public order. It is also well settled that in interpreting an enactment, the court should have regard not merely to the literal meaning of the words used, but also take into consideration the antecedent history of the legislation, its purpose, and the mischief it seeks to suppress. Right? This sub-article 1. ये इसमें प्योरली लॉ स्टूडेंट के लिए है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हाँ हाँ प्रोसीक्यूट बता रहे हैं हम. इसमें तीन केस का दो केस का रेफरेंस दे रहा, सॉरी दो का. We may also consider the legal position as it should emerge, assuming that main section 124 is capable of being construed in the Literal sense in which the Judicial Committee of the Privy Council has construed it in the cases referred to above. On that assumption, it is not open for this court to construe the section in such a way as to avoid alleged unconstitutionality by limiting the application of this section in a way in which the federal court intended it to apply. Intended to apply it. Sorry. In our opinion, these are decisions of this court which amply justify our taking the view of the legal position this court in the case of ये RMD Chamar Bagwala versus Union of India has examined in detail the several decisions of this court, also as also of the courts in America and Australia. After examining those decisions, this court came to the conclusion that if the impugned provisions of law come within the constitutional powers of the legislature, by adopting one view of the words of the impugned section or act, the court will take view of the matter and limit its application accordingly, in preference to the view which would make it unconstitutional on another view of the interpretation of the words in question. तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसके फेवर में कोर्ट फिर जाएगा. इन दैट केस कुछ ज्यादा ही मतलब एकेडमिक है मेरा इसमें. सवाल ये है, इस जजमेंट में आर्टिकल 20 कहाँ आया? वो ढूंढ रहा था. 19 की बात कर रहे हो, 20 की बात कहाँ हाँ पे?
20 तो होगा इसमें। कहीं दिखाई नहीं दिया 20 इसमें। क्या बोल रहा है ये, क्या क्या बात कहना चाह रहा है ये? अच्छा, ये बोल रहा है केदारनाथ सिंह में सुप्रीम हाँ, कोर्ट हेल्ड द क्लास 1 ऑफ आर्टिकल अप्लाइज ओनली टू सब्सटेंटिव criminal laws and not to procedural laws. The court also held that the principle of ex facto law apply only to criminal laws and not to। क्या बात कर रहा है, यहाँ कहाँ है ये? है? ऊपर देखें सर थोड़ा सा। एक मिनट। 20 का कहाँ आ रहा है? सही बोल रहा। सेडिशन का डेफिनेशन दे रहा है, सेडिशन एंड इंसाइटिंग डिसअफेक्शन। वो तो ठीक है ना, वो मैं 20 ढूंढ रहा हूँ, 20 किधर है? हाँ वही 20 अभी तक दिखाई नहीं दिया सर, मैं भी देख रहा हूँ। इसमें कहीं नहीं है इस पेज में। नहीं, नहीं 20 है, है। वो घूम फिर करके वापस वहीं वहीं ऊपर ही ले जा रहा है। तो ये 19 पे ही है, ये जजमेंट 19(1)(a पे ही है, 20 नहीं है इसमें। स्टेट ऑफ बॉम्बे में बोल रहा है, इसको फिर से मैं इसको शेयर करता हूँ। अब ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है, जिस बंदे ने इसको लोड किया होगा उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि 20 की बात नहीं कर रहा, तो इसको कहाँ से तुम गुजर रहे हो? गलती किया है फिर। 19(1)(a तो है। काथी कालू ओगड़, ये क्या है? Clause 2 of Article 20 applies only to subsequent prosecutions. हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, नंदिनी सरस्वती भी है इसमें। एक मिनट, मैं इसको ढूंढता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, इसका है कुछ? काथी कालू ओगड़, मतलब डबल जेपटी पे बोल रहा है। अच्छा इसमें है, 20 में इसमें है। ये भी उन्हीं का है, सिन्हा साहब का ही है, 61 का जजमेंट है। जी, double jeopardy. One cannot be tried for the same offense more than once and punished. हम्म, Article 20. अरे बाप रे, कितने है ये? ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जजेस हैं। 11 लोग हैं। बाप रे। नहीं, ये केस भी देखो, उसी उसी तरह का ही बीपी होगा सिन्हा, ना। बीपी सिन्हा हाँ, 1, इमाम 2, 1 दास 2 3, 3 गजेंद्र 4 50, 5 सरकार 6 5, 7 सुबोधा 8 9 6, 10 11 ही बताया हूँ। गुप्ता 8, दयाल 9, अयंगर 11। ओके, इसमें क्या है? नहीं, केस भी उतना ही ग्रेव होगा ना। हाँ, Testimonial compulsion, obtaining specimen writing and thumb impression from accused, statement of accused in police custody used in evidence, whether it contravenes Article 20, Sub-Article 3. so this was the question before the court. Correct, sir. Whether you can compel the accused
to give evidence by such means, giving a specimen writing or signature of finger impressions forcibly, whether it contravenes that article 20. So इसमें बोला section 73 of the Indian Evidence Act empowers the court to obtain specimen writing or signature and finger impressions of an accused for the purposes of comparison. ठीक है. Sections 5 and 6 of the Identification of Prisoners Act empower a magistrate to obtain the photograph or measurements of an accused person. Section 27 of the Indian Evidence Act permits the reception in evidence of statements made by an accused in police custody which lead to a discovery. It was contended by the accused persons that the obtaining of evidence in any of these ways amounted to compelling the person accused of an offence to be a witness against himself in contravention of Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution. It was further contended that it was implicitly the fact that the accused was in police custody when the specimen signatures or thumb impressions, etc., were obtained, and that compulsion was used, held that there was no infringement of Article 23 of the Constitution in compelling an accused person to give his specimen handwriting or signature impressions of his thumb, fingers, palm, or foot to the investigating officer under orders of a court for the purpose of comparison. Held further that the provision of Article 27 of the Indian Evidence Act did not offend Article 20 Sub-Article 3 unless compulsion was used. ये जगह तो इम्पोर्टेंट है. Unless compulsion was used in obtaining information, कोई अपने से थोड़ी देगा. Compulsion was not inherent in the receipt of information from an accused person in the custody of a police officer. It will be a question of fact in each case to be determined by the court on the evidence before it whether compulsion has been used in obtaining the information. ये प्रूव करना तो बड़ा डिफिकल्ट है सर. Guarantee include not only oral testimony given in court or out of court, but also statement in writing which incriminate the maker when figuring as an accused. Okay. हाँ. Now, what is accused? Any person on whom there is reasonable suspicion that he has committed an offense unless proved guilty. So he is नहीं, अभी accused. यहाँ पर यह हो रहा है कि if a person is accused करके बात कर रहा है ना वो. जी जी. That means So he has what, not been what the proved person is guilty. converted into the category of accused. हाँ. तब नहीं कर सकते ना, उससे पहले तो आप कर ही सकते हो ना. अच्छा. मतलब मेरा कहने का ये है, आप इसको इस समझ तरीके रहा से हूँ मैं. समझने की कोशिश करो कि अगर मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर हाथ डाल दिया एज कस्टम ऑफिसर और उसको लेके गया इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भाई ठीक है चलो तुम्हारा हाँ. स्टेटमेंट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. सो हाँ. दैट टाइम ही इज तब नॉट तक एक्यूज्ड. he is not an accused. The moment I arrest him, I charge That certain person for an charge offense. him for violation of certain sections and then हाँ. take him to the court. कोर्ट. Then only he becomes an accused. कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट. उसके सामने मैंने रिमांड एप्लीकेशन रखा और उसने उसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया, तब वो अक्यूज हुआ ना. हाँ. मतलब अरेस्ट जैसे जैसे आपने उसके जो फंडामेंटल राइट है, जो लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी, क्या बोलते हैं, फ्रीडम है, उसको हाँ. आपने कर्टेल किया. फ्रीडम कर्टेल करने से तभी वो मतलब तब जो accused है बन गया ना एक्यूज वो, उससे बनता पहले है. तो फ्री है वो. तो अगर कोई बंदा आकर के पुलिस में स्टेटमेंट देता है कि साहब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो उसका तो सिग्नेचर और सब ले ही सकता है वो, या वॉलंटरली दे देता है, कुछ हाँ. बोलता ही नहीं है. फिर बाद में फिर उसको ठीक है, उसके स्टेटमेंट के बाद में फिर यूज कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर मान लो वो बेकार हो, इधर उधर घुमा रहा हो, बाद में दूसरा कोई आके बोले कि साहब यही तो मेन आदमी है, तो कस्टम में तो उसमें उससे निकलने का कोई चांस ही नहीं है. मतलब एक दफे दे दिया तो निकलने का चांस ही नहीं है. दूसरे में फिर भी थोड़ा सा मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने फिर भी जो है थोड़ा सा वो है, आप डिफेंस ले सकते हो कि वहाँ तो जबरन लिया 161 गया. है ना, वहाँ तो हाँ 161 हाँ. है. इसमें तो कोई उपाय ही नहीं है बचने का. एक अच्छा, दफे दे सेकंड क्या दिए बोल तो रहा है, गए. the word to सेल्फ be इन. witness, the word to be witness in article 23
do not include the giving of thumb impression or impression of palm, foot or हम्म, finger. ठीक है? जी To be witness. अच्छा, तो उसमें ये नहीं है. ओके. देन थर्ड क्या बोल रहा है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स कन्वेइंग हम इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द पर्सनल नॉलेज ऑफ the given and does not include mere mechanical process of producing document in court which do not contain any statement of the accused based on his personal his knowledge. Okay. personal knowledge. In order to come within the provision of 23, the testimony must be such character that by itself it should have the tendency to incriminate the accused. Okay. To avail the protection of article so and so, the person must be. ये बहुत important है. The person must have stood in the character of an accused person at हाँ, the वही time वही he मैं सवाल made the पूछ रहा था. state. ये देखा, ये हाँ, याद यही आप है. बोल रहे थे. ये बहुत यस, important है. यस, इसके ऊपर पूरा this is the fulcrum. यस. this is the fulcrum. ये प्रूव हो जाएगा तो बस खत्म. दास साहब क्या बोल रहे हैं? The protection afforded by दास साहब is बोल रहे हैं not protect merely in respect of testimonial compulsion in the courtroom, but extend to be compelled. compelled testimony previously obtained from the accused. Okay. अच्छा. मतलब पहले prior to his production in court अगर कुछ लिया हो तो he is covering that also. And it goes beyond. देखिए, the words to be a witness in Article 23 means to furnish evidence and cannot be confined. Cannot be करके negative में start कर रहा है. Cannot be confined to imparting personal knowledge. Such evidence can be furnished through lips or by production of a thing or of a document and other modes. मतलब इसको तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके ले जा रहा है. ठीक है, ऑफिसर के लिए इसमें फायदा है. Accused person furnishes evidence when he gives his specimen handwriting or स्पेसिमेन deeds, हैंडराइटिंग. but in doing so, the accused does not furnish evidence against himself by themselves these specimen or impression Do do not not. incriminate or even tend to incriminate the accused, and he cannot be said to be compelled to be a witness. ये बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन है. ये क्या मेजॉरिटी जजमेंट है? कैसा जजमेंट है? इसको देखो तो क्या है ये? मेजोरिटी होगा सर, मुझे लग रहा है. एक आध मतलब नीचे जाने से पता चलेगा. थोड़ा सा हल्का स्क्रॉल करें सर. ये अलग दिया इन लोगों ने. ओके. एसके दास सरकार एंड दासगुप्ता, Justice S.K. Das Sarkar and Dasgupta delivered this compelled to a witness. एक मिनट नीचे देखते हैं क्या बोलते हैं फिर ये. The question then is an accused person furnishing evidence when he is giving specimen, handwriting or impressions of palm, foot, etc. There is no infringement of Article 20, sub-Article 3 by compelling an accused person to give his specimen, handwriting or signature or impression of his fingers, palm or foot to the investigating officer or under orders of the court for the purpose of comparison under the provisions of Section 73 of the Indian Evidence Act. Though we have not been able to agree with the view of our learned brethren that to be a witness in Article 23 should be equated with the imparting of personal knowledge, or that an accused does not become a witness when he produces some document not in his own handwriting, even though it may tend to prove facts against him. डिसेंटिंग जजमेंट है. हाँ, डिसेंटिंग है. मतलब एक जगह एग्री कर रहे हैं, पार्शियली डिसेंटिंग है.
It may be pointed out that in this question, in any case, the accused does not become a witness against himself by giving his specimen signatures or impressions of his fingers or palms. It appears to us to be equally unnecessary to decide another question which was mooted in the course of the hearing, whether the prohibition of Article 23 operates only after a person has been accused of an offence, or even before that stage. Admittedly, in all these cases, the person on whose behalf the protection under Article 20 subarticle 3's claim gave the specimen signatures or impressions of fingers or palms after he had been actually accused of an offence. So we think it's right, therefore, not to express any opinion on these questions. लटका दिया. ये किस तरह का मतलब ये टिप्पणी जो है, we think it right, therefore, not to express any opinion on any of these questions. एक मेरे को जजमेंट याद आ रहा है डीके महाजन का. डीके महाजन का जजमेंट पढ़ो पढ़ो तो कैसा है इसका. ठीक है इसमें यार डीके महाजन का नीचे क्या बोल रहा है सर इसमें, एक दफे देख लें सर. एक मिनट थोड़ा सा इसको देखो क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. कहाँ पे जस्ट मिनट. इसके नीचे लास्टली क्या बोल रहा है. और भी है क्या उसके नीचे. खत्म है ना. पता नहीं, खत्म है तब तो खत्म है. तो फिर इसमें मतलब कंक्लूजन क्या निकला फिर. तो इसको पढ़ो तो अभी मैंने ये मेरे को ये जजमेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि हम कस्टम्स में इस जजमेंट को काफी रिलाई करते थे. देखो इसको छोड़ देते हैं, एनफोर्समेंट इसको छोड़ देते डायरेक्टरेट क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी थोड़ा सा है. क्लियर कट नहीं है ये वाला जो हम लोग अभी देखे, ये क्लियर कट नहीं है. खुल जा भाई. खुल गया. एक मिनट बताओ ये वाला देखो ये वो कैसा है. जी इसमें है ना आर्टिकल 23. हाँ 20 सब आर्टिकल 3. हाँ इसमें अभिषेक बैनर्जी वाला ये है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन 1994 का. पांडियन साहब. अरे हाँ पढ़ूं सर. नहीं इसमें एक्ट और हेड नोट है ही नहीं. सीधा आ गया वो जजमेंट पे. हाँ हाँ ठीक है. whether magistrate before whom a person arrested under subsection 1 of section 30 of the FERA 1973, which is pari materia with section 1 of subsection 1 of section 104 of customs act. मतलब FERA और इसको कस्टम में हाँ है. हाँ 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 तो ये बोलता pari materia दोनों एक ही is produced under subsection 2 of section 35 of the Foreign Exchange Regulation Act has jurisdiction to authorize detention of that person under section 167 subsection 2 of criminal procedure. मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है कि नहीं भेज सकता ये बोलना चाह रहा है. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्वेश्चन. अच्छा taken to the magistrate while disposing of the legal question and inclined to deal with. FERA and custom is more or less the same. The provision relating to arrest and production of the arrestee before magistrate are identical. हाँ. The arguments by both the parties have been advanced pertaining to provisions of both the acts, and almost all the decisions cited
relate to the provisions of both the acts. There is a vertical cleavage of opinion, or difference of opinion among the various high courts on the above legal question which has come up for adjudication in the present appeal. In this appeal by special leave is directed against the judgment of Delhi High Court dated 1990 by 5. अच्छा. अच्छा, 9. ये consequent upon the above dictum by majority, it has been held in the present case that the magistrate has no power to remand a person produced before him in accordance with Section 35, subsection 2 of Foreign Exchange Regulations Act. 35 corresponds to 19B of old Foreign Exchange Regulations Act, and subsection 104 of Customs Act are identical. ठीक है. How the acha does not lay down any procedure how the magistrate must deal with the arrestee हम्म. when brought before him either by the enforcement officer or customs officer as the case may be. हम्म. now ये 35 की बात कर रहा है, 104 की भी बात कर रहा है. लेकिन इसमें तो every person arrested should be produced without unnecessary delay before a magistrate. ये तो हो गई. ये बकवास कर रहे थे ना, डीके महाजन में गड़बड़ हो रहा था ना. अब ये देखो क्या बोल रहा है. The key question that has come up for consideration of whether magistrate before whom a person arrested under Section 35 is taken can detain the arrestee in judicial custody, and if not, what the magistrate is expected to do. To answer those questions, we have to examine subsection 2 of Section 35A of Foreign Exchange Regulations Act and subsection 2 of Section 104 of the Custom Act, which is perimeter reading. Every person arrested shall हाँ तो टेकन टू अ मैजिस्ट्रेट, ये तो हर कानून में है सर. इनिशियली तो मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा ना, देन ओनली दैट मैजिस्ट्रेट विल फॉरवर्ड द पर्सन टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट. ओके. ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर. ऑफिसर का डेफिनेशन ठीक है, यहाँ ठीक है, बोल ठीक रहा है. है. वो तो बहुत गड़बड़ हुआ अभी. बहुत कुछ हुआ उसमें. हाँ, प्रॉपर हाँ. ऑफिसर का डेफिनेशन लेके बोल रहा है. हम्म. Construction of language, legal principle and construction of language, jurisdiction to authorize detention of an वी आर कंसर्न विद 20 की बात कर रहे हैं ना. 20 देखते हैं क्या होगा. जी जी. ये है. हाँ, yeah, in this context there's देखो. no ये doubt that यस. हाँ. huh, नो डाउट no देयर doubt इज. that no investigation by an officer equivalent or comparable to an officer in charge of a police station or police officer in a proceeding under any of the two special acts as contemplated under chapter 12 of the code. हाँ, करेक्ट. तो ये पुलिस ऑफिसर तो है नहीं. He is not a police officer, customs officer. But what section 167 envisages is that the arrest is an accused or accused person against whom there is well-founded information or accusation requiring an investigation. Firstly, the reason given in the imputed judgment for holding that section 167 subsection 1 is neither replaced nor substituted by any provision of the special acts is that the arrestee by authorized officer or empowered officer under the Foreign Exchange Regulations Act or Customs Act, respectively, cannot be said to be an accused or accused person, which expressions are used in Section 167, or accused of an offence, which expression is used in Article 23 of the Constitution and in Sections 25 and 27 of the Evidence Act. In support of this reading, some decisions of this court have been relied upon, which we would deal at the later part of the judgment. True meaning of person, ये तो पूरा definition पे चला गया अभी. Person accused is under 167 of the code, IPC. It is germane to note that though the word person is defined in so and so, which are identical and are not exhaustive but an inclusive one, the word I
the word Hmm. I accused Accused. or accused person Hmm. or accused Is an not offense are not defined in defined Penal in Code IPC Prevalent or Case. Indian Evidence Act or General Clauses Act. Hmm. In the Code So of Criminal they, Procedure also these words are not defined except as inclusive meaning of the word accused is given in explanation to section 273 of the code, confined to only the mode of taking and recording evidence in the course of trial and other proceedings as envisaged in that section. बोल रहा है section 273 cannot and should not be strained and stretched to such an extreme extent to make it applicable in all circumstances wherever the word accused appears in the code. ये लिमिट कर दिया इसको. this lesson gives a clue providing or suggesting an answer to the problem that Hmm. we are trying to solve. We are अभी वो trying to solve. accused की problem solve कर रहे हो, क्या है वो accused की problem उसको? Accused includes the person in relation to whom any proceeding under Chapter 8 has been commenced under this code. ये कहाँ से ला रहा है? वो ला रहा है आपका ये CRPC से ही ला रहा है. अच्छा, फिर अच्छा एक चीज वो बोल रहा है फेरा और कस्टम्स एक्ट में नहीं है. एक जगह क्या बोल रहा था ऊपर ये in none of the chapters sections in chapter 8 the words accused or accused person or accused of an offense or accused are used, barring the word person as deployed in section 35 of Foreign Exchange Regulations Act and section 104 of the Customs Act. इस पे वो डिपेंड कर रहा है अब. In this context, a relevant doubtful question arises for deliberation whether the expression person accused or accused person found in section 167 of the code and person accused of any offense used in Article 23 of the Constitution and sections 25 and 27 of the Evidence Act denote one and the same meaning, though it is not absolutely essential to exhaustively examine the connotation of these two expressions and render out considered and reasoned opinion. Yet, it has become necessary to ponder over the limited question as to whether the expression accused and one accused person or I accused person appearing in ये section. जो ये वो लगा रहा है ना एक इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है ना सिंगल उसकी जगह वो जब हाँ उसको हाँ कन्वर्ट किया होगा ना वहां से पीडीएफ से तो वहाँ वो आई गड़बड़ हो accused, गया. हाँ हाँ. Appearing in section 167, subsection 1 and 2, denote a person accused, as recommended by the Joint Committee to make it clear that the would apply not only to the proceedings against but also proceedings inclusive of security proceedings under Chapter 8 of the Code. The words under Chapter 10 and 8, मतलब 18, 20, 21, 22, 23, occurring in old section 353 have been substituted by the present section by the words in the course of trial or other proceeding. Consequent upon change in the substantive part of the section, it has become necessary to introduce the explanation so that the evidence in security proceeding against a person shall be taken in his presence or in the presence of his pleader when the personal attendance is dispensed with. हाँ ये जगह ठीक बोल रहा हूँ. Must be taken in his presence of pleader also बोल रहा हूँ. now why we are uh, breaking our head on this is because we want to find out what is accused and what is accused person तो पब्लिक को ये नहीं लगना वही चाहिए तो कि ये बोल रहे हैं. पढ़ती में In बोल रहे none of ध्यान the रखिए sections of chapter 8 the word accused or accused person or accused of an offense or accused of any offense are used, barring the word person as deployed in section 35 of Foreign Exchange Regulations Act and section 104 of the Customs Act. This question is said that reason to fear commission of breach of peace वो तो अलग चीज होगी. बहुत इलाबोरेटली डिस्कस किया. 67 अच्छा ये
पर्सन को बोल रहा है। यहाँ देखिए सर, एक 66 में देखिए सर थोड़ा सा, Section 35 Foreign Exchange Regulations Act and Section 104 of the Customs Act, which confer power on the prescribed officer to effect the arrest, deploy only the word person and not accused or accused person or accused of any offense. In fact, the word accused appears only in the penal provisions of the special acts, namely such subsection 4 of section 56 of FERA and subsection 3 of section 135 of the Customs Act, while explaining as to what would be the special and adequate reasons for awarding the sentence of imprisonment for a minimum period, although subsection 1 to 3 of section 56 of FERA 1 and 2 use the expression person who becomes punishable on conviction. मतलब पर्सन के ऊपर ही हो सकता है, अक्यूज होने का जरूरत नहीं है, हम्म यही तो बता रहा है सर। हम्म हम्म, हम्म। अक्यूज तो मतलब बाद में, पर्सन होना काफी है। Verse 67 In में this पूरा constant पर्सन and एक्यूज हो relevant गया। doubtful question arises for deliberation whether the expressions person accused or accused person found in section 167 of the code and person accused of any offense evidence act denotes one and the same meaning. Yet it is necessary to ponder over the limited question as to whether the expression accused and accused person appearing in section 167 1 and 2 denote a person accused of any offense. तो अंग्रेजी इसमें चला गया, the legislative change. बाद में बोलता है मजिस्ट्रेट हाँ, को दैट पावर है उसको। पढ़ो इसको। लेट अस नाउ अप्रोच द हाँ. aspect matter from a different angle. Aspect of the matter from a different angle with reference to provisions of Article 20, sub-article 3 of the Constitution as well as Section 24 to 27 of the Evidence Act. The prohibitive sweep of Article 20, sub-article 3, which imposes a ban on self-accusation reads, no person accused of an offence shall be compelled to a witness against himself. ठीक है. In explaining the intendment of Article 23 relating to search and seizure of documents under Section 94 and 96 of the Old Court and 8-judge bench in MP Sharma versus Satish Chandra, District Magistrate, Delhi, held that one of the components for invoking subclause 20 Should be. should be that it is a right pertaining to the person accused of an offence. Having regards to the facts therein, it has been held the cases with which we are concerned have been presented to us on the footing that the persons against whom the search warrants were issued were all of them persons against whom the FIR was lodged and who were included in the category of accused therein, and therefore they are persons accused of an offence. यही तो मार दिया। फिर देखिए ऊपर कुछ बोल रहा था, अभी बोल रहा है accused of an offence within the meaning of Article 20 sub Article 3, and also that the documents for whose search the warrants were issued being required for investigation for the alleged offence, such searches were for incrementing material, तो उसको भी कर दिया। Similarly, for invoking the constitutional right against testimonial compulsion guaranteed under Article 23, it must appear that a formal accusation has been made against the party pleading the guarantee, and it relates to commission of an offence, which in the normal course may result in prosecution. Here again, the nature of accusation and its probable sequel or consequences are regarded as important. Both the benches have discussed the distinction between the expression accused person and person accused. Similarly, 11 bench for it cannot be said to have compelled a witness again simply because. अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। ये वही वाला 11 जो judge हमने bench, पढ़ा था, ये हाँ है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, went into question that by majority concluded that an accused person cannot be said to have been compelled to be a witness against himself simply because he made a statement while in police custody without anything more. While it is anything more required, that has been explained in the following words. To be a witness in its ordinary grammatical sense means giving oral testimony in court. Case law has gone beyond the strict literal interpretation of the expression, which may now bear a wider meaning, namely,
bearing testimony in court or out of court by a person accused of an offence orally or in writing, to bring the Hmm. statement in question within the prohibition of Article 20, Subarticle 3, the person accused must have stood in the character of an accused person at the time he made the statement. ये important है. Character of an accused person. That was the precise question I was asking, na? जी Huh. जी जी. Hmm. Character of an accused person. It is not enough that he should become an accused any time after the statement has been made. Made. नंदनी सतपथी में है ये. अच्छा, okay. As appearing अच्छा. in many more, but suffice to note that the same expression is found in section 25 and ठीक है. ये क्या बोल रहा है? It is Clauses appropriate 1 to 3. to note that clause Speak this of a person person arrested. arrested. Use the word person. Every person who is arrested and detained in custody. Whenever a person is arrested and detained in custody, thus while referring to a person arrested and detained, neither Article 22 nor Section 167 employs the expression accused of any offence. Accused person. Viewers, please note that judges लोग कितना अपना दिमाग कितना खोलते खेलते हैं हैं. वर्ड्स को लेकर. हाँ, मैं तो खेलना ही बोलूंगा ना. देखिए इतना एक पूरा मतलब निकाल निकाल कर बोल रहे हैं. किस चीज का वर्ड्स का मतलब, कॉनोटेशंस, एक्सप्रेशंस क्या है. बाप रे इसमें. Tell that a person हाँ, arrested by person arrested by customs officer, not a person accused of an offence within the meaning of Article 20 दिखा. Starter. Yes, हाँ because मेरे ख्याल में accuse of an offence तब होगा जब वो कोर्ट में जाकर के वहां पर उसके खिलाफ हाँ चार्जशीट फाइल हो जाएगी ना. बिल्कुल बिल्कुल. उससे पहले तो उसको accused का ऑफेंस होगा ही नहीं ना. नहीं. तो किसी को अगर स्टेटमेंट के लिए बुला रहे हैं, सम्मन दे रहे हैं, तो ही कैन नॉट से दैट कि आई एम अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. ऐसा. हाँ तो बोल रहे हैं ना. Secondly, he made the statement under compulsion. It is further held the statement is recorded under Section 108. He is not a person accused of an offence under Customs Act. ये देखा Section मैं बताया ना, मैं बोल 108 में रहा हूँ. देने यस से. हाँ हाँ. यस यस. यहाँ तो बोल दिया है क्लियरली. हम लोग इसीलिए रेफर करते थे, डीके महाजन को रेफर करते थे. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है. इसमें साफ कर दिया है पूरा. हाँ. He is not a person accused of an offence under the Customs Act, and an accusation would stamp a person with the character of an accused of any offence is leveled only when the complaint is filed against that यस. person by the customs 202 officer, 202 तब जब तक तो नहीं होगा. complaining of the commission of offence under the provisions of the Customs Act. जब तक complaint नहीं file हो रहा है, he does not कंप्लेन become an कंप्लेन accused. क्या है, पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं और बाकी हाँ जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग कंप्लेन फाइल करते हैं. जी. देखा. अभी पुपलंडी में क्या बोल रहा है देखो. Held that a person being interrogated during investigation is not a person accused of any offence within the meaning of Article 20, Subarticle 3. हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, पब्लिक को हो गया होगा एकदम शायद. क्लियर हो गया. मतलब बहुत डिफरेंस है. नॉर्मल मतलब एक्यूज्ड और इसमें बहुत डिफरेंस है. Nandini Satpathy, in this case, Supreme Court held that the protection against self-incrimination is not absolute and can be waived by accused. The court also held that the accused cannot be compelled to give evidence against himself, but he or she can voluntarily give such evidence. Okay. Voluntarily, definitely he can give evidence. एकदम तो क्या सही लिख बता देंगे, रहा है. लिखवा देगा पुलिस वाला कि ठीक है, आई एम गिविंग अ वॉलंटरी स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम. अगर कोई देना चाहता है दे देगा. तो हम लोग तो लिखवाते हैं, दिस इज माय वॉलंटरी स्टेटमेंट गिविंग विदाउट हाँ हाँ कोर्ट हाँ दिस एंड लिखवाते तो दैट. हैं.
हाँ, हाँ लिखवाते तो हैं। नहीं तो पढ़ भी लेता ना, फिर वो तो पढ़ भी लेता है उस समय। ये पढ़ना है क्या मिथु वाला? दीजिए। डबल वही, जेपटी है। हाँ, दीजिए ना। डबल जेपर्डी तो इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम सेम सेट ऑफ फैक्ट्स जब तक नहीं होगा एंड सर्कमस्टांसेस, डबल जेपर्डी हो जाएगा। स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का है। लॉ एक ऐसी चीज है जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार अलग ही निकल के आता है। मैं पता नहीं कितनी, मतलब 100 टाइम्स पढ़ा होगा मैंने डीके महाजन को, लेकिन जितना रिलेवेंट होता है उतना पढ़ करके छोड़ हाँ देते हाँ हैं। हाँ। नहीं तो आप केस केस के हिसाब से पढ़ रहे थे उस समय। अभी तो आप एकेडमिक मतलब वे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो नया कुछ लगेगा ही आपको। उस समय तो जितना जरूरत था उतना पढ़े होंगे। कोड भी तो पूरा पूछता नहीं है ना, रेलेवेंट पोर्शन ही पूछता है। हम्म। इसमें चंद्रचूड़ साहब है, वाई वी चंद्रचूड़। 83 चीजें हैं भाई। हम्म हम्म। Mandatory sentence of death for murder committed by life convicts is violative of rights guaranteed under Article 1421। ठीक है। नहीं, इसमें डबल जेपटी कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ। नहीं देख रहा हूँ सर, नीचे करने से तब आएगा। नहीं है। नहीं नहीं तो। ये क्या है, कुछ भी लिखता है क्या ये लोग? कहीं से भी लाके कुछ भी रख देता है लोग। सर एक आर्टिकल मैं दूं सर? पढ़ो ना। हुँ? हम्म। नहीं मैं एक दूं सर? हाँ, नो प्रॉब्लम, चलो दो। एक मिनट सर। मैं लिंक दे रहा हूँ सर। वही मैं पढ़ रहा था जब आप आने के पहले। मैं वही पढ़ रहा था। एक सेकंड सर, इसमें दे रहा हूँ सर, प्राइवेट चैट में। कौन सा देख रहा हूँ मैं? है। नहीं सर एक मिनट। जी सर आ गया। ये वाला जो दिया है, एक बार देखिए ना सर। इतना एग्जॉस्टिव नहीं है, फिर भी अपना अच्छा, काम चल जाएगा इसमें। आई ट्रिगर का है ना? हाँ। BHU। अच्छा। हम्म। सही है। चलेगा सर ये? हम्म। इसको मैं भी सेव करके रख देता हूँ।
ठीक है, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ सर। बहुत छोटा है लेकिन सर, एक दो चार जजमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करो, बाकी तो हाँ, बेसिक। वही वही मैं बोल रहा हूँ, सबको समझ में भी आएगा। Provision against ex post facto law, clause 1 of article 20. The provision in question, that is article 20 sub article 1, says that one must not be prosecuted and convicted in accordance with those laws which didn't exist at the time of commission of the offense by the accused, and also must not be inflicted with punishments greater than those existing at the time of commission. This provision negates the chance of retrospective implementation of laws. मतलब पीछे नहीं है regarding criminal offences. In simpler speak, this provision brings a clamp down to the legislative prerogative of the legislation by prohibiting retrospective implementation of a law having criminal nature. इसमें illustration दे रहा है, assuming that X practices black magic and murders a child on so and so date. Later, in 2012, later in 2013, the legislature passes a special act, eradication of human sacrifices, black magic, jo bhi ho, etc. But that person can't be prosecuted and charged under that special act, as the commission of offense date back to when the act didn't exist. Though legislation in India has the authority to implement laws retrospectively, this clause prohibits the legislature to enact a criminal law retrospectively. This provision ensures no one should be booked or charged under such laws which were not in existence at the time of commission of the offense. The landmark judgment governing this doctrine came in the year 1953 in the case of Kedarnath versus State of West Bengal. In this case, the Honorable Supreme Court of India observed that whenever an act is declared as a criminal offence and or provides penalty for the same by the legislature, it is always prospective in nature and can't be implemented retrospectively to uphold what is being said under Article 20, Sub-Article 1. However, only the procedure of sentencing and convicting is what is prohibited under this clause and not the trial itself. Thus, a person accused, according to a particular procedure, can't be questioned under this clause and doctrine of ex post इसका facto law. दादा, इसका वो बोल दो, साइटेशन बोल दो। साइटेशन इज 1953 AIR 404। हाँ, यहाँ खोलने से सर मिल जाएगा, क्लिक क्लिक करें सर, यहाँ नहीं नहीं, वो मैंने नाम खोल पर। लिया, मैंने खोल लिया। हाँ, ये जो हम लोग पहले केदारनाथ पढ़ रहे थे वो अलग था, ये केदारनाथ अलग है। ये अलग है। हाँ। ये वेस्ट बंगाल का है। इसमें पतंजलि शास्त्री हैं, मुखर्जी बीके हैं, विवियन बोस और हसन, गुलाम हसन है, और जगन्नाथ दास बी है। ये अलग है। सर आप क्लिक करने से भी दिखाई देगा सर, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स आप क्लिक कर दीजिए उस पर ब्लू पे, तो आ जाएगा वो। मेरे को अलग, ये अलग पेज पे खुल रहा है वो, इसलिए मैं। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं सर, खुलना दीजिए ना अलग पेज पे। तो दिख रहा है क्या? तो ये नहीं यार, दिख तो नहीं रहा है। हाँ, तो फिर वही ना, उसको दिखना चाहिए ना, फिर दिखाता हूँ। तो आप ही बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, नहीं दिखाई, थोड़ा दिखा देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में आ जाएंगे वापस। जी हाँ, यही है, केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
1953 AIR 404. हाँ, special courts should try special kinds of offences, empowering executive to direct particular cases to be tried by special courts. Equal protection of law, tests of validity, reasonable classification, imposition of additional fines, legality. ये पढ़ूं sir, whether an enactment providing for special procedure for the trial of certain offences is or is not discriminatory and violative of Article 14 of the Constitution must be determined in each case as it arises, for no general rule applicable to all cases can safely be laid down. Held. G. Held also by the court that under Article 20 of the Constitution, the accused could not be subjected to any fine greater than which might have been imposed on them under the law in force when the offence was committed, even though the Act of 1949 empowered the court to inflict a greater fine. जिस समय हुआ था उसी समय इम्पोर्टेंट है, इतना ही काफी है सर। Yes, yes, आगे yes. पढ़ने से और कंफ्यूजन होगा सबको। नहीं नहीं, वो नहीं करना भी नहीं है। जी सर, वही चीज लिखा हुआ है अभी जो हम लोग पढ़े सर। यही है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये तो दूसरा है। ये दूसरा है। ये ओवरव्यू है, ये किसका है ये? ये भी ठीक है लेकिन नहीं, जो ओवरव्यू ऑफ आपने पढ़ा आर्टिकल 20। जो आपने पढ़ा था वही पढ़ते हैं ना। इसको इसको रख देते हैं एक तरफ को। मैंने खोल के रखा था ठीक अलग से। ठीक है ठीक है। तो फिर से दिखाता हूँ। मैं वो छोटा सा इसलिए निकाला था कि कभी बीच में बोलना पड़ता तो फिर बहुत छोटा है ना, तो बोलने में आसान रहता है। However, only the procedure of sentencing and convicting is what is prohibited under this clause and not the trial itself. Thus, a person accused according to a particular procedure can't be questioned under this clause, and doctrine of ex, ex post facto law. Dealing with a similar situation in the case of Mohanlal versus State of Rajasthan, AI 215, 2015 SC 2098, which involved Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances Act. The court opined that only conviction and/or punishments under an ex post facto law is prohibited under Article 20, and not the trial or prosecution itself. Also, trial under a different procedure than what existed during the commission of the act doesn't come under the ambit of the same and can't be struck down as unconstitutional. तो कोई बेवकूफी लेके गया होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में। ट्रायल का तो प्रोसीजर इज नॉट द एक्ट ना। Correct, sir. प्रोसीजर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, प्रोसीजर को हासिल भी कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है? जी प्रोसीजर जी। इज नॉट अंदर एनीवे। Another important judgment in the case of Maru Ram, etc. versus Union of India and another, ये 1980 का judgment है. The court observed that Article 20 sub Article 1 also included the rule that there would be no retrospective infliction of penalties heavier than those existing ones at the time of commencement of the offence. ठीक है। और जिस समय वो offence शुरू हुआ था उस समय जो punishment था वही मिलेगा, मतलब बाद में जो है वो लागू नहीं होगा. However, an exception also exists.
to the restriction under this provision. In the case of Ratanlal versus State of Punjab, the Honorable Supreme Court allowed for such retrospective implementation of criminal laws where the issue pertinent is reduction of punishment in the said offence. Reduction of punishment in the said offence. when government is not, state is not feeling कि हाँ ठीक है ये मतलब ऑफेंस जो है ज्यादा हुआ है, उसको उन्होंने पनिशमेंट कम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो ठीक है भाई, रेट्रोस्पेक्टिव लगा दो इसको, है ना? हाँ जी, वही किया तो लेकिन ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट था अभी जो हम लोग निकाले, वही जो आप अभी जो बोले ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट था। कर्सरी ग्लांस में ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी जो आप बोले एकदम सही बोले। Now they are discussing the doctrine of double jeopardy. Double jeopardy. Clause 2 of Article 20. The doctrine of double jeopardy, which traces back its origin to American jurisprudence of punishment, means that no person can be prosecuted and punished twice for the same offence in subsequent proceedings. And Article 20, Sub-Article 2, which reads that no one could be convicted and punished more than once for the same offence involving the same set of facts, guarantees against the multiple convictions and double jeopardy. In the case of Venkataraman versus Union of India, the Supreme Court of India established that this provision deals exclusively with judicial punishments and provides that no person is prosecuted twice by the judicial authorities. The most crucial landmark judgment came in the case of Maqbul Hussain versus State of Bombay, where the person accused was possessing some amount of gold, which was against lex loci at the time, and gold was confiscated by the customs authority. And later, when the person was prosecuted before a criminal court, the court was confronted with the question whether this amounts to double jeopardy. But the Supreme Court observed that departmental proceedings, that is, by customs authority in this case, doesn't amount to trial by judicial tribunal. Thus, the proceedings before the criminal court is not barred in this case, and the proceedings can go on. In a nutshell, departmental proceedings are independent of trial by a judicial court or tribunal. However, the prosecution may happen if the facts are distinct in subsequent proceedings. Same was established by the Supreme Court. जो उस दिन आप बोल रहे थे सर, in case of A. Mullah versus State of Maharashtra, and was observed that Article 22 would not be attracted in those cases where the facts are distinct in subsequent offence or punishment. The defense from prosecution for the second time has also been embodied in Section 300, subsection 1 of the CRPC, which says that someone who has been convicted, prosecuted by a competent court for some offence will not be liable to be prosecuted again till the previous conviction acquittal remains in force, thus prohibiting from a conviction for a second time for the same offence and on the same set of facts. This provision does not devise a rule whether second trial is permissible and where not. हाँ ये चीज है, second trial permissible or not, ये एक important question है. However, the application of this provision does demand certain conditions to be fulfilled. First, the accused or the person in question must have been tried by the court previously, and it is concerned only with judicial prosecution and proceedings, not departmental or some other kind of authority. Prosecution by some other kind of authority or proceeding. Secondly, the court trying the case must be competent. That is, it should act under its competent jurisdiction and shouldn't exercise its power ultra vires. Thirdly, the previous proceeding must have ended in either acquittal or conviction. And if it ended merely after inquiry, such cases are not covered under the ambit of Section 301 of ये CRPC. सेकेंडरी क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो, क्या अल्ट्रा वायरस वर्ड कहाँ से लेके आते Thirdly, हो? huh? Achha, सेकेंडरी, secondly, the court trying the case must be competent. इट्स ऑलराइट, It हाँ, should act under competent jurisdiction and इट्स shouldn't ऑलराइट, exercise its power ultra vires. ये क्या मतलब मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई कोर्ट सेटअप हो तो वो नहीं होगा, यही बोलना चाह रहा है. अच्छा,
मतलब ऐसा कोर्ट होना चाहिए विच शुड हैव प्रॉपर पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो कहीं पर उसको बता, अदरवाइज इट विल बी हेल्ड एज अल्ट्रा वायरस बोल देता ना। ये अल्ट्रा वायरस कामा करके अल्ट्रा वायरस लिखा है ना इसने, इसलिए पूछ रहा था। लिखने में गड़बड़ किया है। हाँ। अच्छा, थर्डली, थर्डली ये जो बोल रहा है, हाँ, ये जैसे बोल रहा है द प्रीवियस प्रोसीडिंग मस्ट हैव एंडर्ड इन एक्विटल और कन्विक्शन, डिस्चार्ज में क्या होगा सर फिर? must have ended in either acquittal or conviction, and if it ended merely after inquiry, such cases are not covered under डिस्चार्ज the मीन्स ambit। ट्रायल चला नहीं ना, हाँ, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो उसको दोबारा कर सकता है वो लोग। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हाँ, चीज यहाँ क्लियर नहीं किया, देखिए यहाँ हाँ, बोलना चाहिए था। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि डिस्चार्ज में तो फिर बोलना चाहिए था ना कि दोबारा कर सकते हैं। हाँ। Fourthly, the previous conviction acquittal must be in force and should not have been set aside by appeal or retrial. This is an essential condition because if in absence of, let's say, previous conviction, यहाँ पे there एक will be मिनट, no दादा bar दादा एक in the मिनट second। दादा, हाँ, yes, हाँ हाँ योर सर। योर क्वेश्चन इज दैट डिस्चार्ज बाय कोर्ट ना। हाँ, by court तो मतलब whatever evidences and facts was were there available at that time। हाँ हाँ। at that time, तो court did not find it suitable for trial ना, तभी डिस्चार्ज हाँ, किया। तो तो if no other case could be other made out, evidences are लेकिन brought, other evidences हाँ are brought forth before हाँ the बाद court, में, हाँ हाँ, तो फिर वो बाद में ट्राई कर यदि सकता है ना। एडिशनल एविडेंस आता है तो फिर अगेन दैट पर्सन कैन बी, हाँ, आई तो मीन, वहाँ पे ट्राइड। वही मैं जबरदस्ती बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लगेगा। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा बोलना चाहिए था इनको ये। हाँ। Fourthly, the previous conviction acquittal must be in force and should have not have been set aside by appeal or retrial। ठीक है, this is an essential condition because in absence of, let's say, previous conviction, there will be, हाँ, जो ये भी थोड़ा आंसर कर रहा है, there will be no bar for the second prosecution second trial में happen। इसको और क्लियर कर देना चाहिए था पहले ही। And lastly, in the subsequent trial, he or she must be tried for the same offense on the same set of facts hoga for any other offense which is having a different charge under section 221 subsection 1 and 2 of CRPC। Nonetheless, there exists an exception to this provision, the principle of issue estoppel. The above mentioned expression provides for estoppel against the ongoing prosecution if the fact finding happens to be in favor of the accused, but it does not bar from subsequent. So if a person is accused of an offense and he has been acquitted, and after the appeal period is over, this person, the same person for the same offense can be tried again। No, Fourthly I क्या don't बोल रहे think हैं? so because it has to be a different set of Fourthly क्या facts बोल, and देखिए, circumstances. No? fourthly the previous conviction must be in force and should not have been set aside by Set appeal aside. or retrial। Okay, now if it has been, conviction has been set aside, then हाँ हाँ, तो तब तो कुछ नहीं होगा ना। वो तो वही बोल रहा है, दो पार्ट में देखिए ना सर। फोर्थली, द प्रीवियस कन्विक्शन एक्विटल मस्ट बी इन फोर्स एंड शुड नॉट बी सेट असाइड, मतलब वो कन्विक्शन मस्ट बी इन फोर्स, एक्विटल मस्ट बी इन फोर्स। hmm बोलता है इन एब्सेंस ऑफ, लेट्स से, प्रीवियस कन्विक्शन देयर विल बी नो बार। थोड़ा एम्बिग्विटी है इसमें, वर्ड्स में एम्बिग्विटी है। देयर विल बी नो बार फॉर सेकंड प्रोसिक्यूशन एंड सेकंड ट्रायल में हैपन। मतलब अपील या रिट्रायल में यदि देखा जाए कि इज बीन एक्विटेड, तब तो नहीं होगा ना। वही तो, बराबर, तब ठीक है, कहाँ ठीक से है। होगा फिर? थोड़ा वर्डिंग में इन लोग लिखने में गड़बड़ किया है। Nonetheless, there exists an exception to the provision that the principle of issue, अच्छा, okay। The above exception provides for estoppel on the ongoing prosecution if the fact finding happens to be in favor of the accused but does not bar from subsequent proceeding for a different offense। वो तो ठीक है। However, to invoke this defense, not only the parties involved in the facts and issue should be the same, अच्छा, parties involved should be the same, Ravinder Singh versus Sukhbir Singh।
अगर किसी और को जोड़ दिया तो हो जाएगा कन्विक्शन उसका, फिर से शुरू हो जाएगा ट्रायल, है ना? बोल तो रहा है यही बात. The fact finding happens to be, but it does not bar from subsequent proceeding for a different offence. ठीक है. Self-incriminating. Prohibition against self-incrimination. The foremost rule which provides a protection from a conviction for offences is prohibition against self-incrimination. The same is provided by the Constitution of India in Part 3 under Article 20, Sub-Article 3. It describes that no one could be forced to utter or provide such information or evidence orally or by documentary means which could be used against him or her during further trial or procedure. Also, the term witness includes both oral and documentary evidence, as laid in MP Sharma versus Satish Chandra. As held in the same case, however, there is no restriction whether a search for document or searches is being done by the authorities. However, the information and evidence produced voluntarily by the accused is permissible. कितना घटिया कानून है ना. एक हाँ. आदमी डॉक्यूमेंट लेकर के आया, अगर मैं उसको सीज कर लूं हाँ तो तो वो 20 तो आ जाएगा हो एविडेंस में. गई. हाँ तो एविडेंस में तो आ जाएगा वो. बट ही कैन नॉट प्रोड्यूस, आई हैव टू सीज इट. हाँ. There is Jones who is being tried for an offense of murder of his stepbrother. He says that I have killed my stepbrother. Okay. Same could be admissible in court under Section 27 of the Evidence Act. इसने बोल दिया उतना ही काफी है. Confession हुआ ना, आगे चलो. हाँ. But Because it doesn't violate Article 23, but is upon the prosecution to find out whether the information provided is voluntary or ये under compulsion. हम्म, मतलब कोई मार कर इसको बोला होगा कि बोलो हाँ भाई I've killed my stepbrother. The rationale behind this is that the evidence must be in the form of communication, and for the same reasons, the medical examination done during the course of a trial is permissible. This is why narco analysis test is frequently used by authorities to gather information. But narco analysis is sparingly used, and evidence and does not violate the provision under Article 23. But this is sparingly used. सब केस में थोड़ी ना आपको किया analysis के जाता है. ऊपर जो एविडेंस आते हैं उसको तो लेता ही नहीं है. That is only together कि आगे आगे जाना है, हाँ, को आगे जाना है. bolster the available primary evidence. By itself तो लेता ही नहीं है. सही बोले आप. Prohibition against self-incrimination could only be put into effect by the person if the person accused is accused of a criminal offense. अच्छा ये दूसरे केस में नहीं होगा. Other than criminal cases में. There must exist a formal accusation against the person, and mere general inquiry or investigation doesn't form grounds for the same. Article 20, Sub-Article 3 also lays down that a person cannot be compelled to a witness in his or her own prosecution of case. This is also embodied in the American Constitution by virtue of the Fifth Amendment. Also, the authorities cannot compel the accused to produce evidence which can be used against his trial. Those evidence can be oral or documentary. However, an exception to this lies under Section 91 of the Code of Criminal Procedure, which gives authority to a court or an officer to issue an order demanding documents that were under the possession of the accused. Another provision which guarantees prohibition against self-incrimination is Section 161, subsection 2 of the Code of Criminal Procedure, which says that while being examined by the authorities, a person is bound to answer all the questions truly, excepting those which have a propensity to be used against the person himself later during trial. इतना ज्ञान सबको बोल सकता है, अपने बारे में नहीं नहीं, बोलेगा. इतना ज्ञान सबको थोड़ी है. कोई कुछ भी बोल देगा. Thus, here we come to the end of this segment discussing अच्छा अब ये क्या conclusion. बोल रहा है? If we would bother to analyze all the clauses of Article 20 of the Indian Constitution, we would come across this interesting inference that these clauses, Article 20, Sub-Article 1, 2, 3, reflects
protection of convicted persons from excesses of legislation, judiciary, and executive actions, respectively. Also, these protections are available to all people, Indians as well as foreigners, and thus forms the bedrock of the Indian Constitution and guarantees basic human rights to the convicted and the accused. Its availability, even during an emergency, is being imposed under Article 352 of the Indian Constitution is what makes it unique and so much important for the discharge of democratic values. ये शॉर्ट में बता रहा है। पढ़ा दिया इसको, अच्छा है, लेकिन इंदिरा ने इमरजेंसी टाइम में तो सब कुछ बाजा बजा दिया था, कोई बात होती है? 20 को वो कर दिया था, ऐसा बिल्कुल। तो ना 20 को एग्जाम करके रखा था क्या? हाँ, नहीं, खत्म कर दिया था सब। वही तो। That's why it came up before the court कि ऐसे सस्पेंड किया जा सकता है। चलो हो गया आज का, ठीक। हाँ सर, मोटा मोटी तो हम लोग कवर कर दिए हैं सभी। नहीं, इतना ही था, तीनों को बताना था। जब ये मतलब जी जी जी, हाँ वो बीच में छूट गया था वो। हम ऑपरेशन लोग जब ऑपरेशन कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव, ये हो गया, और सेल्फ इम्यूनेशन का हो गया, और डबल हाँ, डबल और जेपर्डी का दूसरा हो गया, सेम तीन। सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे दो दो पनिशमेंट नहीं हो सकता, हम्म, डबल जेपर्डी। चलो 11 बज रहे हैं, आप सो जाओ आराम से। ठीक है सर। और कल का क्या होगा सर? कुछ नहीं, कल को कुछ नहीं। कल जाके नो मोर जिहाद में बैठेंगे, अगर होगा तो देखेंगे। ओके, कल सर एक दफे घर जाऊंगा मैं थोड़ा माता जी के पास, तो शाम को यदि टाइम मिलता तो मैं जुड़ जाऊंगा फिर। हाँ हाँ, नो मोर जिहाद में जुड़े। कल संडे है ना, उनका रहता है, फिर अपना क्लैश कर जाता है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, चलो बाय। ठीक है सर। बाय। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। गुड नाइट सर।